Good evening and warm welcome to everyone. First of all, wishing you all a very happy and prosperous new year. The entire calendar year 2025 was backed by several constructive developments, but it was also a year filled with significant market impacting news flow. Despite a sharp sell-off after the US announced tariffs across multiple nations, our market displayed remarkable resilience and staged a recovery towards the end of the year. At the same time, corporate earnings remained weak or muted for almost 6 quarters, keeping sentiment under check. However, as we look ahead to the second half of FY26, expectations are building around an improvement in earnings, which could once again attract smart long-term investors into the market. So, what were the key factors in calendar year 2025 that prevented a deeper fall in the market? And more importantly, what could change the tide and push the markets meaningfully higher from current levels? To discuss this, we have with us Arun Agrawal. We will also cover top stock ideas to buy with a long-term view. Arun, welcome to the show. Please share perspective on the market and road ahead. Thank you. Sure. Thank you, Shrikant. So in today's webinar, we will talk largely how 2025 went by, what were the challenges, that we faced, what were the positives out of it. We'll have a look at how the indices performed, in December and 2025, both Indian indices as well as how we performed vis-a-vis the global indices and the reason for the same. And then we'll move to our outlook on 2026 as well, where we talk about what are the positives for the market, what factors can, support markets going in 2026 on the valuation, and then post that we'll talk on the investment ideas. So let me start first with the year that went past by, that's 2025. So overall, on the domestic macro front, our economy did really very well. The Indian economy grew at a very, very healthy pace in 2025, and it remained the world's fastest growing economy among major economies. With GDP now valued at close to $4.2 trillion, India has surpassed Japan to become the fourth largest economy. The GDP we all knew in second quarter grew by around 8.2%. Even first quarter it was very strong at 7.8%, and fourth quarter was around 7.4%. So the last 3 quarters we have been consistently seeing GDP growing every quarter. Now, during this period, the Nifty index gained around 10.5%. That's in 2025, and it also reached new high. However, the rally did lack breadth with mid-cap and small-cap indices and stocks remaining under pressure during 2025. Now, when we look at the flows where FIs were net sellers across Asian markets in 2025, India witnessed slightly or in fact, meaningfully higher outflows during 2025. And this selling was largely absorbed by the domestic institutional investors, which was again supported by retail participation. Next slide. Now, this specific chart shows the performance of the Indian indices, that's Sensex, Nifty, and even when you look below, it's a BSE mid-cap and small-cap indices as well. So on a 1 month basis, that's for the month of December, our markets actually delivered negative returns across, across all the indices. This was despite we saw pretty soft inflation number, narrowing of November trade deficit, and even the repo rate cut by the RBI. Despite that, the markets remained weak. That was largely because of as the FI outflows persisted during the month. That's for December. Even if you look at the 1 year basis, that's on the right hand side, where Nifty 50 index delivered around 10.5% return. Whereas when you look at the bottom on the right side, where the BSE mid-cap index gave a very, very soft return of 1.1%, whereas the BSE small-cap index and the NSE small-cap 100 index gave negative return of 6 to 7%. Next slide. Yeah, this is on how the sectors performed last year. So again, the first column is for the 1 month period, where we saw the metal index gaining in the month of December. This was despite we saw pretty soft inflation number, narrowing of November trade deficit, and even the repo rate cut by the RBI. Despite that, the markets remained weak. That was largely because of the as the FI outflows persisted during the month. That's for December. Even if you look at the 1 year basis, that's on the right hand side, where the BSE mid-cap index delivered around 10.5% return. Whereas when you look at the
whereas other some of the index gave around 1 to 2%, and a lot of other indices were in the negative zone. But let's focus on the right hand side column, which is for the 1 year return, where BSE metals gave a very stupendous return of 27%, led by the rally that we have seen in the global commodity markets. Auto sector gave around 21% return. That was largely backed by the GST rate cut that we saw in the month of September. Post that, we have seen the volumes of autos have seen a meaningful improvement after that. Apart from that, we had BSE Bankex giving around 16% return. That was largely because the valuations were quite reasonable on the banking space, and we have talked about banking as one sector where we find the value quite reasonable. So that's one space which has given a decent return, whereas most other segments delivered negative return. To look at amongst that, I'll just talk on two specific sectors. One is the infotech, that's a BSE infotech or the information technology, where the returns were 15% negative for the year. This again was largely because we have seen the impact of slowdown, or the US or the investments, or the revenues from the IT side, where we have slowed down on investments there from the IT companies customers, and other is on the real estate side, where the sector has done very well till over the past few years, but because of higher base we have seen a bit of slowdown happening there on the real estate space. Next slide. Now, here we'll talk on the global indices, how India performed vis-a-vis global. So this month again, Nifty was marginally negative, whereas you see most of the indices for the month of December, that's the first column we are talking about, that's 1 month period, where most of the global indices gave positive returns, whereas Nifty again underperformed the month of December. And apart from that, on the right hand side, when we see the 1 year performance, our Nifty return was around 10.5%, but we look at a lot of economies which gave significantly higher returns, which was Korea gave 76% returns during this period, during 1 year, whereas Taiwan and other markets, Taiwan also gave 26% return, whereas Germany, Singapore. See, what we have seen is that both developed and under emerging markets give significant returns. There were only very few markets which actually underperformed the Indian markets in terms of return in 2025. Next slide. This is the global chart where the valuations for the global indices, where if you look at Nifty index, we are trading at close to 20.5 times on FY26 numbers. And when you look at other economies or other indices, they are trading at a substantially lower valuation. In the earnings growth column, if we can focus on 2025, where Nifty 50 index return is expected to be 7.7%. And in 2024, it was 6.6%. Now, the challenge for the Indian economy, for the Indian markets, has been that the earnings growth has been quite soft and tepid for the Indian markets. अगर आप देखेंगे 2024 में 7% ग्रोथ है, ये साल हम 8% ग्रोथ ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जबकि हमारे वैल्यूएशंस 20 टाइम्स के आसपास है या उसके ऊपर है. तो इस टाइप के ग्रोथ, लो ग्रोथ में एफआईएस को ऐसा लगता है कि दूसरे मार्केट्स हमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं. सो एक जो अर्निंग्स ट्रेजेक्ट्री है, वो जैसे इंडिया की इंप्रूव होगी, हम एफआईआई का भी रिटर्न आगे देख सकते हैं. बट राइट नाउ अगर हम देखेंगे तो हमारी अर्निंग्स ग्रोथ लास्ट 2 साल से काफ़ी सॉफ्ट रही है, और एक वो बड़ा कारण रहा है जिसमें कि एफआईएस हैज़ बीन सेलिंग, और इसीलिए एफआईआई की सेलिंग इंडियन मार्केट्स में बाकी मार्केट्स के मुकाबले ज़्यादा रही है. नेक्स्ट स्लाइड. सो अगेन कमिंग बैक टू व्हाई इंडियन मार्केट्स ने क्यों लास्ट ईयर अंडर परफॉर्म किया था. वन इज स्लो डाउन इन कॉर्पोरेट अर्निंग्स. ये हमने पिछले साइड में बात की थी, जहां पर हम देख रहे हैं लास्ट 2 ईयर से हमारी निफ्टी 50 इंडेक्स की जो अर्निंग्स है वो काफ़ी सॉफ्ट रही है, लो रही है, जबकि हमारे वैल्यूएशंस काफ़ी हाई है. अभी इतनी हाई वैल्यूएशन पे इतनी लो अर्निंग्स ग्रोथ इज समथिंग मेक्स आर मार्केट प्रिटी एक्सपेंसिव. एक वो रीज़न रहा था. हमने दूसरी चीज़ देखी कि अर्निंग्स में डाउनग्रेड्स रहे हैं. जैसे कि हम साल शुरू करते हैं, वी आर माइट बी एक्सपेक्टिंग से 10, 12, 15% रिटर्न, जबकि एक्चुअल अर्निंग्स काफ़ी लो हो रही है. तो ये एक हमने पैटर्न देखा था 2025 में, जिसके वजह से हमारा मार्केट्स अंडर परफॉर्म कर रहा है. सेकेंड है कि रिलेटिव बेसिस पे अगर आप देखें इंडियन मार्केट्स को और ग्लोबल मार्केट्स को, तो वहां पर हमारा जो ग्रोथ है उसके मुकाबले हमारी वैल्यूएशंस हाई है. तो ये एक बड़ा रीजन रहा था एफआई के लिए कॉल लेने के लिए कि वेदर दे वांट टू स्टे विद इंडियन मार्केट्स, और यहाँ से प्रॉफिट बुक करके दे वांट टू मूव सम अदर ग्लोबल मार्केट जहां उन्हें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल रही है. तो दैट्स व्हाई सेलिंग इन इंडियन मार्केट्स वाज हायर. थर्ड एक जो बड़ा रीजन रहा है वो ये भी रहा है बिकॉज हमारी जो एआई रिलेटेड जो एक थीम है,
हमारे पास बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज, कोई मीनिंगफुल एक्सपोजर नहीं रहा है एआई थीम में। एंड वो जो सेकेंड हाफ है, अगर आप सेकेंड हाफ देखेंगे लास्ट ईयर का, तो वो एक बहुत बड़ा ड्राइवर इमर्ज हुआ था बहुत सारे ग्लोबल मार्केट्स में, जहाँ पे हमने रैली देखी थी एआई को लेकर के। बट हमारे पास कोई ऐसी कोई थीम नहीं थी जिसकी वजह से हमने ग्लोबल मार्केट्स को अंडर परफॉर्म किया। एक तीस जो चौथी चीज ये रही थी कि इंडिया यूएस का जो टैरिफ है, इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ है, 25% हाई पेनल्टी है, 25% नॉर्मल टैरिफ एंड 25% पेनल्टी, वो अभी तक अनरिजॉल्व है। तो बाकी आप बहुत सारी कंट्रीज के साथ देखोगे तो यूएस के टैरिफ्स फिक्स हो गए हैं, फाइनल हो गए हैं, दे आर मच बिलो देन व्हाट इंडिया इज पेइंग राइट नाउ। तो एक वो भी बहुत बड़ा रीजन रहा है जिसके वजह से थोड़ा प्रेशर हमारे डोमेस्टिक मार्केट्स पे रहा है। द लास्ट थिंग आई जस्ट लाइक टू हाईलाइट इज व्हाट वी हैव सीन ऑल्सो सीन कि कुछ कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पे हमने वीकनेस देखी थी। जैसे आईटी सेक्टर है, जैसे हमने बात बताई थी, आईटी ने काफी अंडर परफॉर्म किया था। कंजम्पशन सेक्टर्स भी अगर आप देखें तो काफी वीक थे। इट्स ओनली आफ्टर जीएसटी कट के बाद थोड़ा वहां पर हम रिकवरी देख रहे हैं, बट प्रायर टू दैट काफी वीकनेस रही थी उसमें। और जो गवर्नमेंट केपेक्स है वो भी काफी फ्लैटिश है, वहां पे बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने नहीं मिल रही है। तो ये कुछ डोमेस्टिक रीजंस है जहाँ की वजह से हमारे मार्केट्स ने या निफ्टी ने अंडर परफॉर्म किया है ग्लोबल मार्केट्स को। नेक्स्ट लाइन। Now we'll talk on, let's move a little bit more on the global side कि actually global में क्या हो रहा है. So now when you look at the past 12 months, the global environment, has seen undergone a major significant shift. Now this has been driven, primarily by the series of tariffs which have happened over the months during 2025, which has been introduced by the US, and also the subsequent responses that we have seen from other countries. The geopolitical conflicts have also further, amplified this overall uncertainty and market volatility. In response to this, the global central banks are now have been assessing the evolving conditions and adopting different policy approaches to cushion the economies from these challenges, what we talked about. Now, as a result, the monetary policy stances have been different across regions, and the elevated uncertainty could lead to increased volatility in interest rates going forward as well. अगर आप देखें Q3 के नंबर्स अगर ये देखें तो Q3 CY25, जैसे द पीरियड वी आर टॉकिंग अबाउट इज से जुलाई टू सितंबर पीरियड, तो यूएस इकोनॉमी हैज शोड स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। यूरोप की जो इकोनॉमी है वो बहुत सॉफ्टली एक्सपैंड हुई थी। जापान हैज स्लिप्ड इनटू कॉन्ट्रैक्शन, उन्हें डीग्रोथ दिखाया जीडीपी में। सो इन्फ्लेशन ट्रेंड्स हैज आल्सो डाइवर्ज्ड, वो भी अलग अलग रहे हैं। यूएस इन्फ्लेशन हैज डिक्लाइंड फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर में, काफी मॉनेटरी पॉलिसीज हुई है तो उसमें यूएस इन्फ्लेशन डिक्लाइन हुआ है, raising of for easier monetary policy. यूरो एरिया इन्फ्लेशन हैज स्टेड क्लोज टू द टारगेट। सो आप देखेंगे जो अलग अलग कंट्रीज की जीडीपी ग्रोथ और इन्फ्लेशन जो मूवमेंट है वो काफी डिफरेंट रहे हैं। उसी की वजह से जो सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज है वो भी डिफरेंट रही है। दिसंबर में यूएस फेड ने रेट कट किए हैं, जापान ने वहाँ ऑन द ऑपोजिट साइड रेट इंक्रीज किए हैं। So together, these decisions, are underscoring a pretty fragmented global monetary landscape, which has been shaped by inflation dynamics and growth conditions, what we talked about. The global GDP growth is also expected to be soft in 2026. This is due to weaker household sentiments, a pretty fragile investment outlook, and limited policy support. Further, we also believe that in US, if there is any slowdown in the AI spending, that could also trigger some market correction, hurting wealth as well as consumption. Next slide. Coming back to the domestic market, if you look at India, our inflation is very much under control. November inflation was only around 0.7%, and it remained very, very, much under control. It was below the RBI's lower tolerance limit, largely due to the food price deflation that we have seen in past few months now. The overall inflation dynamics in India continue to favor a supportive monetary policy stance, and the real GDP growth in H2 of FY26 is projected to remain strong, about 7%. And in the December meeting, the RBI MPC had cut repo rate by 25 basis point to 5.25%. अगर आप देखेंगे तो आरबीआई ने अब तक 125 बेसिस पॉइंट का रेट कट कर लिया है, एंड आरबीआई हैज ऑल्सो रिवाइज द इन्फ्लेशन एस्टिमेट्स लोअर, एंड दे हैव ऑल्सो इंक्रीज द ग्रोथ प्रोजेक्शंस फॉर इंडियन इकोनॉमी हायर. After this entire 125 basis point cut that they have done, we believe that RBI can deliver one more rate cut of 25 basis point, and after that there will be a very, very long pause in FY27 from the RBI. So we don't expect a lot many rate cuts coming in,
At most, one more rate cut possibly could happen in the February policy, but after that, we might see a pretty prolonged pause in FY27, as the inflation also now we believe would steadily rise. अभी 0.7% जो inflation है, it will gradually increase, not stay at 0.7%. It will eventually increase and move towards the the RBI range. So of 4.5, 5% kind of range, we believe it will move to that. Next. नेक्स्ट स्लाइड या अगर आप फ्लोस की तरफ देखें तो अगर मैं प्राइमरी मार्केट की बात करूं जिससे कि आईपीओ मार्केट है, वहां पर हमने देखा है कि प्राइमरी मार्केट में काफी शार्प सर्ज हुआ है, एक्टिविटीज में इंक्रीज हुई है। आईपीओ और क्यूआईपी बहुत हाई हैं पिछले 2 सालों में। बट इसमें एक ट्रेंड जो हमने देखा ये है कि आईपीओ में काफी सारा जो डाइल्यूशन हुआ है इक्विटी का, वो ओएफएस की तरह हुआ है, जहां पर प्रमोटर्स या पी ने एग्जिट लिया है रेदर देन फ्रेश कैपिटल इशू। अब ये पॉइंट मैं इसलिए रेस कर रहा हूँ बिकॉज अगर फ्रेश कैपिटल इशू अगर ज्यादा होता है तो वो पैसा कंपनी में जाता है, वो उनके केपिक्स प्रोग्राम्स में लगता है। वेरेस ओएफएस वाला पैसा प्रमोटर्स के पास जाता है, दैट डजंट कम इनटू द कंपनी। सो दैट्स वन ट्रेंड व्हाट वी हैव सीन ओवर द लास्ट 2 years इन द आईपीओ। अगर हम सेकेंडरी मार्केट की बात करें तो एफ आई सेलिंग काफी स्ट्रांग रही थी, जैसे मैं बता रहा था आपको पहले भी कि 2025 में काफी सारे इमर्जिंग मार्केट्स में एफआई सेलिंग रही है। ऐसा नहीं कि इंडिया में अकेली रही, बस फर्क इतना रहा है कि इंडिया में जो एफआई की सेलिंग है वो बहुत ज्यादा हाई रही है। सो 2025 में ऑलमोस्ट 17 to 18 बिलियन डॉलर की एफआई की कैश मार्केट में नेट सेलिंग रही है। अगर मैं इसके मुकाबले डीआई है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स देखूं, तो वहां पर हमने देखा है कि उनकी बाइंग बहुत स्ट्रांग रही है, अराउंड 83 बिलियन डॉलर की बाइंग रही है एज अगेंस्ट 17 to 18 बिलियन डॉलर सेलिंग जो कि हमने एफआई की देखी है। तो डीआईएस ने मार्केट को कंसिस्टेंटली सपोर्ट किया है। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ लेट्स सी कि मार्केट्स के लिए क्या पॉजिटिव्स है करंटली। जब हम अभी 2026 के स्टार्टिंग में है तो क्या क्या चीजें हैं जो मार्केट्स के लिए पॉजिटिव है। एक तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज रही है या आरबीआई की पॉलिसी रही है, वहां पर हमने देखा है कि काफी कुछ बूस्ट कंजम्पशन साइड पे मिला है। तो उसका जो फुल बेनिफिट है वो हम 2026 में देखेंगे, बिकॉज काफी सारी जो रेट कट्स हुई है वो स्टैगर्ड मैनर में ओवर द ईयर हुई है। उसका पूरा बेनिफिट हम 2026 में देखेंगे। इवन जो रेट कट हुआ है, हुआ तो फेब्रवरी में था, बट उसका जो सैलरी में जो इम्पैक्ट है वो एवरी मंथ ग्रेजुअली आ रहा है, लोगों के पास बेनिफिट आ रहा है। तो उसका भी फुल बेनिफिट हम ये साल देखेंगे। एंड थर्डली, इवन जीएसटी हैज ओनली कम टुवर्ड्स द एंड ऑफ लास्ट क्वार्टर में आया था, तो उसका भी हम फुल ईयर बेसिस पे बेनिफिट देखेंगे। तो एक तो कंजम्पशन साइड पे वी शुड सी सम इम्पैक्ट ऑफ ऑल दिस मेजर्स, जैसे कि टैक्स कट हुआ था जो बजट में, या जीडीपी सॉरी आपका जीएसटी रेट कट हुआ था, और मॉनेटरी पॉलिसी जो रेट कट्स हुए हैं, तो ये सब चीजें आपके कंजम्पशन को बूस्ट कर सकती है। दूसरी एक चीज है कि हमारा मानसून दिस ईयर अगेन काफी अच्छा रहा है, नॉर्मल रहा है, रिजर्वर लेवल्स अच्छे हैं, विच मीन्स कि आपकी रूरल इकोनॉमी शुड डू वेल। सो दैट्स अगेन अ पॉजिटिव थिंग। क्रूड ऑयल प्राइसेस हैव बीन सॉफ्ट अराउंड $60 एज कम्पेयर टू पिछले साल देखेंगे तो उसके मुकाबले ये साल क्रूड में काफी गिरावट आई है, तो वो हमारे लिए एक फायदा है बिकॉज वी आर नेट इम्पोर्टर्स। But again, lot of global developments are happening, so we should have keep a keen eye on how the crude oil prices move forward going ahead. The other part is that the हमारा जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स है वो काफ़ी स्ट्रांग है। जैसे कि अगर आप देखें हमारी जीडीपी ग्रोथ हम बात कर रहे हैं वो काफ़ी स्ट्रांग है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। सो दीज थिंग्स शुड ओवरऑल should support the earnings growth for the company। एंड हमारी जो अर्निंग्स आउटलुक है और वो भी इम्प्रूव हुई है, वैल्यूएशंस भी, बिकॉज लास्ट फ्यू टाइम मार्केट्स काफ़ी करेक्ट हुए हैं, तो हमारी वैल्यूएशंस रिलेटिवली थोड़ी बेटर है। और डोमेस्टिक पार्टिसिपेशन जो है इंस्टीट्यूशन साइड का वो कंटिन्यू कर रहा है मार्केट में। सो ओवरऑल वी बिलीव दीज आर द पॉजिटिव्स जो 2026 में हम इंडियन मार्केट्स में देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। इसके अलावा व्हाट आर द थिंग्स जिससे कि वेयर वी कुड सी इक्विटी मार्केट्स रिसीविंग अ बम्प अप। यहाँ पर इक्विटी मार्केट से क्या पॉजिटिव हो सकता है, व्हाट एवर वी टॉक्ड अबाउट, वो सब चीजें तो चलो हमें पता है, बट इसके अलावा क्या ऐसी चीजें हैं these things that could happen which should support markets. One is if there is any resolution to the in US India tariff, and that too in near term, अगर next few months में अगर कुछ resolution वहां पर आ जाता है तो I think the market will take that in a positive manner. The other thing is कि ग्लोबल बॉन्ड yield जो है वो काफ़ी हाई है ये टाइम पर, तो उसके वजह से बहुत सारा जो एफआई का पैसा है या इन्वेस्टमेंट्स है वो वहाँ से इमर्जिंग मार्केट्स में शिफ्ट नहीं हो रहा है। अगर वहाँ की ग्लोबल बॉन्ड yields डिक्लाइन हो जाएगी
तो विच मीन्स कि एमर्जिंग मार्केट्स में पैसा आना चालू हो जाएगा, बिकॉज एमर्जिंग मार्केट्स विल स्टार्ट लुकिंग मोर अट्रैक्टिव. And if FI turns positive on emerging markets, including India, because of valuations and also because if global yields fall down, so that's another could be a big trigger for the equity markets in India. Domestic buying to anyways is happening, domestic flow is happening, but once your FI also turns positive, so that should give a boost to the Indian market. गवर्नमेंट केपेक्स एज आई टॉक्ड अबाउट थोड़ा स्लो है ग्रोथ वहां पर. इफ वहां पर भी थोड़ा पिकअप हो जाता है तो दैट शुड ऑल्सो बी पॉजिटिव फॉर लॉट ऑफ सेक्टर्स इन इंडिया. एंड लास्ट इज ऑन दी पिकअप इन अर्निंग्स ग्रोथ. सो जैसे मैं बता रहा था आपको, लास्ट 2 years में निफ्टी इंडेक्स की अर्निंग्स ग्रोथ हैज बीन 6%, 7%, और 8% काइंड ऑफ ग्रोथ रही है. अगर वो डबल डिजिट में आ जाती है, सो आई थिंक दैट वुड बी अगेन अ पॉजिटिव, बिकॉज लास्ट 6 क्वार्टर से आई थिंक हम देख रहे हैं कि T50 की अर्निंग्स ग्रोथ सिंगल डिजिट में रही है. तो वो एक अगर ट्रेंड चेंज हो जाता है, आई थिंक द इंडियन मार्केट्स विल बिकम फार मोर अट्रैक्टिव देन व्हाट दे आर टुडे. नेक्स्ट. अगर हम वैल्यूएशन की बात करें इंडियन मार्केट्स की, तो करंटली जो लास्ट ईयर, जो अगर मैं 1 साल पुरानी बात करूं, तो ये टाइम पर हमें वैल्यूएशन डेफिनेटली बहुत एक्सपेंसिव लग रहा था. बट बिकॉज मार्केट में अभी 12 to 15% पे काफ़ी मार्केट्स एक रेंज में रहा है, बहुत ज़्यादा रिटर्न्स हमने देखे नहीं है, तो ये जो हाई वैल्यूएशन वाला जो चीज़ है वो थोड़ा प्ले आउट हो चुका है. अगर हम ग्रोथ की बात करें, सो दिस ईयर वी आर लुकिंग एट अराउंड 7.8% ग्रोथ FY26 में. नेक्स्ट ईयर वी आर लुकिंग एट 18.2% ग्रोथ, एंड बियॉन्ड दैट 28 में हम देख रहे हैं अराउंड 15% ग्रोथ. now जो नेक्स्ट ईयर की ग्रोथ है 18.2%, वो डेफिनेटली ज़्यादा लग रही होगी ये लेवल्स पे. बट वी बिलीव वो मतलब वो पॉसिबल इसलिए है बिकॉज FY27 में वी एक्सपेक्ट लॉट ऑफ सेक्टर्स विल पार्टिसिपेट इन द ग्रोथ, बिकॉज FY26 में काफ़ी सारे सेक्टर्स ने डी ग्रोथ दिखाई है. बट वी बिलीव बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ स्टेप्स विद द गवर्नमेंट इज टेकन, जो हमने काफ़ी सारे डिस्कस किए हैं पॉजिटिव, उन सभी चीज़ों को लेके चले तो हमें लगता है कि FY27 में ग्रोथ निफ्टी इंडेक्स में अच्छी हो सकती है. एंड वो ब्रॉड बेस्ड हो सकती है. ब्रॉड बेस्ड का मतलब मेरा ये है कि एक या दो सेक्टर नहीं चलाएंगे उसे उसे काफ़ी सारे सेक्टर्स मिलके चलाएंगे. वैल्यूएशंस पे अगर हम आए तो निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है वो अभी ट्रेड हो रहा है ऑलमोस्ट 20.5, 20.6 टाइम्स पर हो रहा है 27 अर्निंग्स पे, एंड 18 टाइम्स अराउंड 28 अर्निंग्स. हमारा निफ्टी 50 का टारगेट दिसंबर 2026 के लिए 29,120 है, विच इज बेस्ड ऑन 20 टाइम्स ऑन FY28 EPS नंबर्स. नेक्स्ट. सो वी टॉक्ड मैक्रो, हमने काफ़ी सारी इंडेक्स की बात कर ली है और इकोनॉमी की बात कर ली. हम थोड़े स्टॉक आइडियाज अभी डिस्कस करते हैं. फर्स्ट आई टॉक ऑन महिंद्रा एंड महिंद्रा. Mahindra and Mahindra is one stock which has done really well over the last few years now, and we believe the stock still has the potential to do well. कंपनी 3 सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है ब्रॉडली: ट्रैक्टर, SUV सेगमेंट, एंड थर्ड इज द लाइट कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट. कंपनी का तीनों सेगमेंट में परफॉर्मेंस रिसेंट टाइम्स में काफ़ी अच्छा है. SUV सेगमेंट में तो मार्केट शेयर गेन कर ही रहे हैं और इंडस्ट्री को भी काफ़ी अच्छे से आउट परफॉर्म कर रहे हैं. ट्रैक्टर में भी अगर आप देखें तो वो काफ़ी अच्छा सा ग्रो कर रहे हैं, लास्ट काफ़ी महीनों से उनकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ रही है. और लाइट कमर्शियल व्हीकल जो कि अच्छा नहीं कर रहा था, बट GST के बाद वहाँ पर भी हम अच्छा ट्रैक्शन, ग्रोथ ट्रैक्शन देख रहे हैं. सो अगर आप दिसंबर मंथ के भी नंबर्स देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं. आप महिंद्रा एंड महिंद्रा के पिछले 9 महीने के नंबर्स, यानी अप्रैल से आप अगर ये साल के अप्रैल टू दिसंबर नंबर्स देखें, वो भी काफ़ी अच्छे रहे हैं. उन्होंने मार्केट शेयर भी गेन किया हुआ है. सो वी बिलीव दीज थिंग्स कंटिन्यू टू मेक कीप अस पॉजिटिव ऑन महिंद्रा एंड महिंद्रा. जितना वॉल्यूम्स ग्रो होगा, ऑपरेटिंग लेवरेज बेनिफिट भी आएगा, मिक्स भी इंप्रूव हो रहा है, तो वी बिलीव प्रॉफिटेबिलिटी पे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा. महिंद्रा एंड महिंद्रा हमारा बाय रेटिंग है फेयर वैल्यू 4350 का, एंड ये हमारा ऑटोज में टॉप पिक है. नेक्स्ट. JSW सीमेंट अगर मैं देखूं तो यहाँ पर दे आर प्राइमरली इंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ सीमेंटेस प्रोडक्ट्स. तो एक तो आपके नॉर्मल सीमेंट्स होते हैं, ये इसके अलावा एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ सीमेंट बनाता है, वो होता है ग्राउंड ग्रैन्युलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट, जिसे GGBS कहते हैं. एंड दे आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ GGBS टाइप ऑफ सीमेंट, जहाँ पर उनका FY25 में अराउंड 84% मार्केट शेयर है. ये एक नीश प्रोडक्ट है, एंड ये हाई ग्रोथ प्रोडक्ट ये डिराइव होता है स्लैग से, एंड इट इज वाइडली यूज इन सब्स्टिट्यूट ऑफ सीमेंटेस मटेरियल इन कॉन्क्रीट मिक्सेस. तो यहाँ पर वी बिलीव कंपनी इज प्रिटी मच इन अ गुड पोजीशन टू एक्सपैंड द मार्केट शेयर. इनका जो ये बेनिफिट करते हैं बिकॉज इनकी सिनर्जीज है JSW ब्रांड के साथ, वहाँ से ये काफ़ी सारा स्लैग रिक्वायरमेंट्स लेते हैं, जो कि इनका बहुत बड़ा एडेड एडवांटेज है. ओवरऑल कंपनी के ग्रोथ प्लान्स हैं विच विल ऑल्सो मेक कंपनी एक पैन इंडिया प्लेयर की तरफ बनाता हुआ दिख रहा है. JSW सीमेंट के जैसे ही उनके वो आगे के ग्रोथ प्लान्स या न्यू कैपेसिटी सिस्टम में आ जाएंगी,
एंड हिस्टोरिकली भी ग्रोथ अच्छा रहा है एंड गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो वी बिलीव कंपनी का ग्रोथ हेल्दी रहेगा. करंटली हमारी इस पे बाय रेटिंग है फेयर वैल्यू 135. I'll stop here and hand over the call to my colleague. He'll discuss other stocks there. Thank you. Yeah, thank you, Arun. Good evening, everyone. Next stock that we are discussing is Thermax, where we have buy view and we have a fair value of 3575. In fact, for last few weeks, we've been pushing this stock. It was our pick of the week also. Thermax being one of the major player in capital goods and a large play on the environment and energy space is likely to be a key beneficiary from a long term in the long run based on capex revival. Plus, if you look at the company is also scaling up its business, they are entering into new growth markets and new geographies as well. Like recently, they have got a major order in Middle East, so that is going to be one of the game changer for the company. In addition, if you look at they're also getting good inquiries from sectors like thermal, cement, steel, and so in that way, that is going to benefit its order book as well. So as I stated in the recent time, they have got a major order win in particularly in the Middle East market. So that will lead to growth in the order backlog as well. So जो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है करीबन 20% का ऑर्डर इन्फ्लोज का FY26 में. So overall, if you look at that will have a positive impact in the coming years as well, and as it will boost its order backlog. उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हमें ये देखना है कि कंपनी ने जो पहले कुछ जो लो मार्जिन ऑर्डर्स लिए थे इंजीनियरिंग सेगमेंट में प्रोजेक्ट साइड में वहाँ पर भी वो प्रोजेक्ट्स का वो दे आर ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन. सो इन दैट वे ओवरऑल द मार्जिन्स इज लाइकली टू इम्प्रूव इन द कमिंग ईयर्स. और जो स्टॉक अगर आप देखेंगे ऑफ लेट है वाज अंडर परफॉर्मर एंड करेक्टेड आल्सो, सो द वैल्यूएशंस आल्सो लुक्स अट्रैक्टिव and the next 2 years earnings growth likely to be in double digit, so that will also lead to a future valuation at a attractive level. We have a buy rating on Thermax. हमने इसको 40 times FY28 earnings पे जो वैल्यू किया है, so that is giving us a fair value of 3575. So on Thermax we are positive, we have buy view with a fair value of 3575. Over to Rini. Thank you, Pankaj sir. Now our next pick is Jubilant Ingravia, where we have also initiated coverage recently with a buy view, and we see this as a transformational growth story. So, Jubilant Ingravia is not a new name in chemicals. It has strong capabilities in pyridine chemistry and long-standing global customer relationships. So, pyridine is basically it's a building block used in your agrochemicals, medicines, vitamins, and even cosmetics. In fact, if you have heard of the name niacinamide on skincare companies, Jubilant is a key global supplier there. The most important or the interesting part is that Jubilant is one of the few large non Chinese players, which gives it a strong strategic edge today. And the company basically operates in three segments. One is your specialty chemicals, which includes CDMO and fine chemicals. And this is its main key growth engine. Then it operates in nutrition and health solutions, which includes vitamin B3 and B4. And the third segment is chemical intermediates, which is a cyclical segment, but it is near the bottom. The interesting part about the company is that all these segments are integrated, forward and backward integrated quite well. So this is a very important thing when you look at chemical companies. So post demerger, Jubilant is clearly moving up the value chain, focusing on pharma CDMO and fine chemicals, which are higher margin and more predictable. So management has also given its Pinnacle 345 vision, which targets 3x revenues and 4 times EBITDA, supporting margin expansion. So our sum of the parts based fair value or target price is rupees 870. This implies about 30 times December 2027 earnings, which
we believe is justified given the transformation underway. So that's it from my side. Over to Gaurav. So yeah, thank you, Rini. So, good morning, everyone. I would be speaking about a company which is a top investment idea for from our side, which is Angel One. So, the company is an full-service retail broker house in India, with a decade of experience of servicing the clients with in content terms, which are 3 crore and 50 lakhs. As per the second quarter of the FY26, the company has seen a steady growth in their customer line, which is a 20 stating it in the number terms. It has seen a 22% upside in the YoY basis and a 1.5% growth in the Q-on-Q basis. The company has 70 lakh active user accounts, with a market share of 19% in the cash segment and the 22% in the FNO segment. Talking about the broader industry, we expect the NSE active clients, which is poised to grow at a CAGR of 10%, from FY25 to FY28. So, talking about the quarter two results, the results posted by Angel One were quite in line with the expectations, and the growth, it reported a growth of 5%, reflecting in the broking and the net interest income. The company has, apart from broking, it's into wealth and asset management. The recurring AUM is of 5,500 crores for the mutual fund distribution, and the AUM for the credit disbursement has jumped 460 crores around during the quarter. Uh, One of the major highlights in the recent results was seen in the interest income growth, which has been pursuant to the growth in the margin traded book funds, which has shown a 26% Q-on-Q growth, and and the interest component contributes around 30% of the total revenue of the company. Talking about the brokerage segment, comparing the company's financials on YY basis, the brokerage segment saw flat and daily volume average due to sloppy markets, and further, the broking segment saw a decline in derivative segments as a result of SEBI regulations. To set off the revenue decline pursuant to the regulation, Angel One announced a price hike in the brokerage, which is came effective from 17th of November 2025, which contributes around 4 to 5% of the pre-tax profits. Talking about the latest updates and developments, as per the latest circular issued by SEBI on the total expense regulation, the brokerage cap which the AMCs pay to the brokers has been reduced to 6 BPS in the cash segment, and it is in the derivative segment it has been reduced to 2 basis point, which might impact the top line. But the streets were expecting more reduction, so it came as a surprise and positive sense for the broking company. This was one of the overhang which the company was facing for the last quarter, and which is behind us now. Talking about the performance, the overall sector performance is being largely affected by the performance of the capital markets. So when the capital markets are sloppy, or you can say sluggish, detailed participation or the volume are usually low, which reflects in the broking and the depository revenue, which contributes around 62% and 4% of the total revenue respectively. So we can expect, we have seen early signs of revival. We have seen a recovery in the total cash and F&O orders, and it is expected to grow more further to up to 186 crores per order per year in the FY28. This would have direct implications on the EBITDA margins, which is expected to increase from 33% to 38%, and the earnings growth for the projected for FY27 is 29.8%, and for FY28 is 20.1%. Stating all these factors, we have an add rating on the stock with a fair value of 2,800. Thank you. Thank you, Gaurav and team. We will now open the floor for Q&A. So ask your questions now. I will start with some of the questions we already have. So one of the participant wants to know the view on ITC. So for this, we have our analyst Amit Agarwal. Amit sir, can you share your views? Yeah. See, recently we downgraded the stock to reduce from add with a reduced target price of rupees 350 from rupees 480.
we saw an unprecedented 60% plus increase in cigarette tax, which marks a very significant departure from what the government did in the past 8 years, and which had supported volume stability and helped the legal cigarette industry to regain some market share from the illegal market. However, the new tax structure, which is very steep, would compel ITC to raise cigarette prices by around almost 35% to remain revenue neutral. We believe this will be ये एक मार्जिन डिस्ट्रक्टिव होगा और वॉल्यूम काफी शिफ्ट हो सकता है इलीगल मार्केट को, और थोड़ा सा मिक्स डिटोरिएशन भी देख सकते हैं। तो इसलिए हमने मार्केट आईटीसी के स्टॉक को डाउनग्रेड किया है। हमें ऐसा लगता है कि जो FY26 का वॉल्यूम्स है वो अभी FY29 में रिफ्लेक्ट होगा, और इसी के वजह से हम हमारा जो एक्सपेक्टेशन है कि FY27 में अर्निंग्स डीग्रो होगा। So overall, we have turned negative on the stock, and we have downgraded the stock to reduce from add with the revised fair value of rupees 350 from rupees 480. Thank you, Amit. So there's one more query for you on Nestle. If you could also share your views on that. See, Nestle is a stock which has been performing very well of late. Last 2 quarters have been very good for the company, and we expect even Q3 to be very good. But we have a reduced rating on the stock, primarily due to its steep valuation of almost 60 times FY27 earnings. We believe the companies to give good numbers in Q3. The company also remains committed to driving penetration and volume growth and continued investments in brands. Company continuously अपना portfolio enhance कर रही है. Maggi has been doing very well for the company. The milk products have been doing very well for the company. But however, the stock is trading at very steep valuation, almost at 60 times FY27 earnings. And given its expensive valuation, we have a reduced rating on the stock with a target price of rupees 1180. Thank you. Our next query is on CG Power. So, Pankaj sir, would you like to share your views? सीजी पावर पे हमारा सेल व्यू है। इसमें हमारा जो फेयर वैल्यू है 610 रुपए का है, 610 रुपीज का। इफ यू लुक एट सीजी पावर आफ्टर एक्विजिशन बाय द मुरुगप्पा ग्रुप, द स्टॉक हैज परफॉर्म्ड रियली वेरी वेल। द कंपनी हैज टर्न अराउंड इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ आल्सो, दे हैव डन वेरी वेल। अगर लास्ट 2 क्वार्टर की बात करें, जो इनका सबसे बड़ा सेगमेंट है इंडस्ट्रियल, वहां पर वी हैव सीन लिटिल स्लो डाउन। वहां पर रेलवेज जो कि ड्राइव करता है वो बिजनेस में, मोटर बिजनेस जो है वहां से आता है, जो बिजनेस रेलवे के थ्रू, वहां पर थोड़ा हमें स्लो डाउन दिखा है एंड लेट रिकवरी दिख रही है इनफैक्ट। तो एक वो रीजन है। और अगर आप दूसरा इनका जो इन्वेस्टमेंट है सेमीकंडक्टर में, लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ी इनिशिएटिव है नो डाउट, लेकिन अभी नियर टर्म में दैट इज इम्पैक्टिंग इट्स अर्निंग्स एज वेल। And also, if you look at valuation, the stock is trading at over 50 times, so that is on the expensive side. So this is the primary reason I think for correction ho jayega. Then we can look at, as of now, we have a sell rating on this stock. Thank you, Pankaj sir. Next question, a couple of questions are from Auto Space. So for this, we have our auto sector analyst Arun Agarwal. So Arun sir, one of the participant is asking, what should you do with Ola Electric? Should you hold or sell? See, Ola, we have a sell rating. The company's performance has been weak. They have lost significant market share, and we believe the company has got some issues they need to address first, and the company will continue to make losses over the next 2, 3 years more. So for the timing, I think one should not really take too much. I mean, the risk is way too high at this point in time, and hence we have a sell rating right now on Ola, given the way we see the future financials for the company. Arun sir, another query is on TMPV, Tata Motors, passenger vehicles, and Tata Motors. What is your view? Sure. Tata Motors, both the stocks. So one is the Tata Motors, which includes the commercial vehicle business. There we are positive. We have seen turnaround happening in the commercial vehicle space. So truck demand, all the things are picking up, light commercial, medium and heavy commercial. We see some positives are happening there. So that's one stock we are positive on, Tata Motors.
which is Tata Motors commercial vehicles, or you can say Tata Motors business. But the stock has had a decent run up, so use corrections if you want to add the stock. For Tata Motors PV, that's a passenger vehicle business. There we are a bit negative, and the reason being the weak performance that we have seen for JLR in first half. Even we believe near-term challenges do persist for JLR. Even though the domestic business might see a bit of recovery because that's the trend what we are seeing in the domestic market. But JLR business, I think, will continue to remain a bit weak at this point in time. So right now we are sell on the PV business or the passenger vehicle business. Sure, thank you. Next couple of questions are from BFSI space. So a participant is asking Union Bank को क्या हुआ है? So for this we have our BFSI analyst Veer. Veer, would you like to answer the query? Yeah, thank you for the question. So Union Bank में firstly we have a positive view. We have a buy rating with a fair value of 175. So अगर Union Bank की अगर हम बात करें, so if you look at the previous many quarters, the bank has been delivering steady results, be it on the margin or be it on the slippage side. But one metric where the bank was not performing really well was on the loan growth side. But Friday, the management reported its Q3 business update, where they reported a loan growth YOY 7% and sequentially it was 4.5%, which is materially better than what they were reporting before. So loan growth was one metric where the bank was not performing well, and यहाँ हमें एक signs दिख रहा है of a revival. Therefore, the stock has seen good rally today and it is trading below price to book. So our positive view on the stocks remains the same. It's a stock which we like, and it's a fair value of 175. So yeah, that's on Union Bank. There's one more query from Saroj Kumar Tiwari. He's asking, please share your view on HDFC Bank and Bajaj Finance, whether to book profit or hold for some more gains. Okay, so on HDFC Bank, we have an ad rating and a fair value of 1,100. So HDFC Bank, they reported their business update yesterday, and where they reported a loan growth of close to 12.5% and deposits were close to 13%. So management has been stating this, that in this financial year, they will be growing their loan book as per the system level, which they have been doing quite nicely. And from the next financial year, they will be delivering loan growth, which would be above the industry. Now, here we need to understand that HDFC Bank की अगर हम बात करें, so their major issue which they have to cross is their LDR ratio, where they have to bring it down to 85% sort of a level. It is currently close to 98% level, but एक साल पहले it was close to 105% level. So the bank is perfectly on track in reducing the LDR ratio, and they can do this by increasing their deposits faster than loan growth. This strategy has been working quite well. So we don't see any problem with HDFC Bank at this state. They've been delivering as they've been telling, and therefore it's a stock which we continue to like. We have an ad rating with a fair value of 1,100. Now on Bajaj Finance, we have an ad rating. Here the fair value is 1125, which we like. Now we have been repeatedly been telling that NBFC is a space which we really like at this point in time. We have regulatory tailwinds, we have margin tailwinds, and the business growth is also starting to pick up. In case of Bajaj Finance, with there has been tax rate cuts for the products which it deals in, which is another tailwind for its business. So overall, it's a stock which you continue to like. They have also reported their business update, and where the business update was broadly in line with our expectations as well. So वहाँ भी we are not seeing any major concerns. And with the sectoral tailwind with Bajaj Finance, we continue to remain positive on the stock. And people with a good 1 year time frame should certainly stick with these financial names. On Bajaj Finance, we have an ad rating. Again, the fair value is 1125. Thank you, Veer. Due to time constraint, I'll take one last question. So, Deepak Chitale is asking, Indian stock market is already expensive compared to others except US. Is this then a time correction rather than global sentiment? I think Shrikant sir can answer this query. So yes, if we go through with the overall valuation of other emerging markets or countries, then in that context, certainly we are trading expensive. But historically also, if we consider our markets as compared to the
overall valuation of other emerging markets, then we remained most of the time expensive at the band of 18 to 20 times. And this time also, like today, in case if we consider the trailing 12 months P, then we are at 22 times as compared to the lower bound or lower band that we see close to 18 times. This time we are specifically bullish on the market is mainly because whenever we consider the future forecasting about the performance of the market, then we have to consider 1 year forward earning. And in that case, if we are of the view that EPS should come somewhere close to 1455, on which already Arun has discussed, if we consider that, then based on that, at current levels, levels of the market, our markets are trading at 18 times, which is the lower boundary that we can expect. And that's the reason we are of the view that at base case level, the market can move towards the levels of 29,000. In case something goes really wrong in the market, then most of the time we see market falls to 16 times. And in that case also, we are of the view that the market should not breach the level of 26,000 so easily. So broadly, we are of the view that the markets to remain within the broader range of 29,000 and 26,000. यहाँ पे हमें जो भी करेक्शन आ रहा है इस मार्केट में, उस करेक्शन को हमें एज एन अपॉर्चुनिटी कंसिडर करना चाहिए। और हमें लगता है कि मार्केट थोड़ा सा और यहाँ पे वॉलेटाइल हो सकता है, क्योंकि अभी बजट आना बाकी है। तो मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल हो सकता है, बट इवेंचुअली हमें लगता है कि ये मार्केट में ग्रेजुअल अपवर्ड एक्टिविटी देखने मिलेगी। ये जो मार्केट है वो मैं कहूँगा कि मैच्योर्ड बुल मार्केट है। और मैच्योर्ड बुल मार्केट में मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं कि मार्केट काफी सिलेक्टिवली चलता है। सिलेक्टिव सेक्टर्स यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। आई मीन टू से जो पार्टिसिपेशन रहेगा वो काफी एक्टिव रह सकता है, क्योंकि यहाँ पे डीप वैल्यू है बहुत सारे स्टॉक्स में। और अगर जैसे एक्सपेक्टेड है वैसे अगर मल्टीपल सेक्टर अगर परफॉर्म करने की शुरुआत कर देते हैं, तो फिर हमें लगता है, जैसे भी अरुण ने कहा था कि यहाँ पे ऐसे यानी कि ये जो ग्रोथ एक्सपेक्टेड है वो ब्रॉड बेस एक्सपेक्टेड, ऐसा नहीं कि किसी एक ही सेक्टर में आएगा। यहाँ पे मल्टीपल एटलीस्ट 4 to 5 सेक्टर्स इस पर्टिकुलर मार्केट में जो एक्सपेक्टेशंस है कि अर्निंग्स ड्राइव हो सकते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। और अगर ये केस अगर एक्सपेक्टेशन के लाइन पे अगर आती है, तो फिर हमें लगता है कि हमें एक ब्रॉड बेस तेजी मार्केट में देखने मिलेगी। सिलेक्टिवली हमें उन स्टॉक्स को खरीदना है जहां पे वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव है। और आज हमने उन्हीं में से कुछ एक स्टॉक्स को कवर करने की कोशिश की है। जैसे कि मारुति भी हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन वी हैव कवर्ड महिंद्रा एंड महिंद्रा बिकॉज महिंद्रा एंड महिंद्रा इज स्टिल below its fair value of 4350. Maruti is trading slightly above its fair value. Accordingly, we have tried to like cover stocks from the pharma space, that is pharma chemical space, that is Jubilant Ingrevia. And there also we have a decent upside from current levels. So broadly, we need to be more and more focus in terms of buying stocks. Whichever the stocks that we are recommending from here, they are backed by fully fundamentals, and also we try to cover them only if there is specific uh, bullishness that we see in the near future. So although all these investments are advised with a view of 12 months, but otherwise, if we consider the overall performance of the market, we are quite optimistic, and we should be buyer on every dip. Thank you, Shrikant sir. With that, we've reached the end of today's webinar. Thank you all for joining us. It's been wonderful having you here. Your feedback means a lot to us, so please share your thoughts in the comment section below. And before we wrap up, stay connected with us on Telegram, Instagram, and Twitter for regular updates and stock ideas. Thank you once again. Thank you.